life to look like. Find sort of the society or the cushioning around them to be able to do that. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे सुपर वुमेन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी मेहमान की बात करें वो है अपेक्षा पोरवाल, जिन्होंने एक अभिनेत्री है, साथ ही एक मॉडल भी हैं। 2015 में इन्हें फेमिना मिस इंडिया दिल्ली का खिताब जीता है, साथ ही मिस यूनिवर्स इंडिया 2017 से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। अपेक्षा, नवभारत सुपर वुमेन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me. अपेक्षा, जैसा कि हम जानते हैं, आपने अभिनय का जो शुरुआत आपकी है वो थिएटर से की है एंड फिल्मों तक का सफर रहा। तो कैसी रही जर्नी आपकी एक थिएटर से फिल्म तक, अनदेखी में बतौर आपने एक्टर डेब्यू किया? मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेशन था एक्टिंग का, पर मुझे कभी सच बताओ वो वाला स्टोरी है ही नहीं कि मैंने हमेशा से सपना देखा। मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे मिस इंडिया में जाना है, मिस इंडिया जीतना है, तो वो मुझे हमेशा करना था। उसके साथ साथ मैं तभी एक स्टार्टअप में भी काम कर रही थी। I'm from Bombay, but I was in Delhi working on a startup in the slum areas, which is in the social sector. I wanted to work in the social sector as well. So what happened was when I came back to Bombay and I was preparing for Miss India for 2017, because I applied for Miss India in 2014. I did not even cross the audition. I went in 2015. I won Miss India Delhi. I reached the nationals, top 20, did not win. But I was like, I have to go for it again. So I prepared again and I went for it in 2017. But while I was preparing, in that time, I was always fascinated by acting. So I was like, मुझे ऐसे नहीं करना कि so I was always fascinated by acting, but I was like कि मुझे पहले अपना पूरा ट्रेनिंग करना है, एक्टिंग स्कूल जाना है, सीखना है ये चीज, और फिर अगर, क्योंकि मैं वो फैसिनेशन में नहीं घुसना चाहती कि मैंने पैजेंट्स भी कर लिया, अब ये भी कर लूंगी, it's because it's two complete different worlds. So I went to acting training. I did the 9-month, I did 2 workshops. Then I did a 9-month diploma program. And then I did 2 theater productions with them. We did like a bunch of shows with Bombay, in other cities as well. And that's when I was like, this is what I want to do for years to come. So I am in the right place. And then after Miss India that year, so 2017 was a little busy because of the pageant and the title and everything that comes along with it. But yeah, then I started auditioning and काफी सारे auditions के बाद अनदेखी हुआ। अगर आज अभिनेत्री नहीं होती तो अपेक्षा क्या होती? Like I said, I'm very interested in the social startup space, which is basically for-profit startups which work in the social sector. तो जो मैं दिल्ली में काम कर रही थी was called Janta Meals. We were basically working in slum areas selling food at affordable rates, जो आपको ऐसे भी जैसे 20 रुपए में खाना मिल जाता है। तो ये काफी हेल्दी खाना था, रोटी सब्जी दाल चावल, जो लेबर अफोर्ड नहीं कर सकते या माइग्रेंट वर्कर्स नहीं अफोर्ड कर सकते। तो सेम खाना we were serving in slum areas. वैसे ही, I wanted to be in the social development sector, and I still hope that I'm in that sector somehow. And yeah, that's probably where I would be working, in the social startup space. जैसा कि आपने कहा था, एक सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, साथ ही मॉडल एंड एक्ट्रेस के साथ काम करना। Social worker, I think these are 2 completely different things. So work for a society. That can be. Yeah, but that's very different from a social worker. Social worker works either in NGOs or they work in like in a pressure group or something. So this is a complete, we can have a long conversation on this, but it's a completely different space. Different. Basically a startup space which works for profit, but in the social sector, which is not a social worker. You're still an entrepreneur or working in a startup. Yeah. बतौर अभिनेत्री कैसे समय मिलता है आपको अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने? Yeah, at this point of time in my life, I only want to work. I'm very, very hungry for work. I want to focus on working as much as I can in different projects, in different roles. So that's where my focus, and that's what makes me happy. It's not like I wake up thinking कि अरे कब मुझे आराम मिलेगा, कब मैं कुछ और कर पाऊंगी। मुझे यही चीज से खुशी मिलती है।
तो at this point I'm just hungry for work and personal life. हाँ, थोड़ा कम मिलने को मिलता है पेरेंट्स से एंड ऑल, दे डोंट स्टे हियर, पर जब हो सकता है तो पेरेंट्स यहाँ आ जाते हैं, जब जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं घर चली जाती हूँ, एंड बाकी तो सब फ्रेंड्स है यहाँ पे। कैसा रहा आपका अनदेखी वेब सीरीज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? इट वाज द फर्स्ट डेब्यू विद यू फॉर द अनदेखी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? या मैं सच बोलूं, आई एम सो ग्रेटफुल कि आई गॉट अनदेखी, बिकॉज यू नो उस समय पे क्या हो रहा था, मैंने पैजेंट्स कर लिया था, तो जो रोल्स मिल रहे थे ना, फिर रोल्स भी आपको एक टाइपकास्ट करने लगते हैं कि यू नो वो उसी स्पेस में रोल्स मिलेंगे, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो भी करना है, पर उस पॉइंट पे मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि मैं जिससे अपनी इमेज ब्रेक कर सकूं, एंड लकीली, और इनिशियली अब जब स्टार्ट आउट कर रहे हैं ऐसा होता नहीं कि प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी होती है और उसमें यू कैन पिक एंड चूज, तो आई हैड अ फ्यू ऑप्शंस, उसमें बड़ी दिल पे पत्थर रख के मैंने एक दो चीज को मना किया, एंड लकीली एट दैट टाइम कोयल केम, एंड यू नो हमें कहते हैं कि जब आप किसी चीज के लिए ऑडिशन करो तो उससे अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितनी रिजेक्शन होती है ना एक एक्टर के, इसमें कितने सारे प्रोजेक्ट्स पे आप मतलब इतने ऑडिशन करते रहो तब जाके कुछ एक चीज क्रैक होगी, या एक चीज के आप शॉर्टलिस्ट में आओगे, उसके आगे का भी नहीं पता। बट व्हेन आई रेड कोयल का स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट सिर्फ एक सिंगल पेज था, ऑडिशन स्क्रिप्ट, और उसमें सिर्फ कोयल की लास्ट में एक लाइन थी बस, एंड जैसे कि शो में उसके हार्डली कुछ लाइंस है, but I read that audition script and I was like, I have to do this part. उसके बाद भी वो ऑडिशन हुआ, फिर सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशन, थर्ड राउंड ऑफ ऑडिशन, फिर एक आई थिंक 10-11 महीने का वेट, जिसमें पूछना नहीं चाहिए पर मैं एक दो बार फोन करके पूछ लेती थी कि क्या हो रहा है ये पार्ट का, यू नो इज इट हैव यू लॉक्ड समथिंग, फिर एक 11 महीने के बाद जाके मुझे कॉल आया कि या वी वांट यू फॉर द रोल ऑफ कोयल, एंड आई थिंक दैट वाज a moment that I'll never forget. अपेक्षा कितनी जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऑडिशन देने होते तो आज ऑफ कोर्स अनदेखी पसंद आई लोगों को, शायद यही कारण है कि आज अनदेखी पार्ट 2 रिलीज हो रही है। सो कितने ऑडिशंस के फेस किया आपने अनदेखी की कोयल तक पहुंचने के लिए? कितने रिजेक्शन मिले अगर आप कहें दर्शकों को? बिकॉज इट्स अ इंस्पिरेशन, क्योंकि लोग कई बार हार जाते हैं, एक बार ना हुआ, दो बार ना, तीन बार, फिर दे जस्ट फेड अप। तो I think you know जब मैं और it's not just about अनदेखी, even today I have to audition, and I think कि unless आप बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाओ, आपको ऑडिशन ही, क्योंकि उस तरह से डायरेक्टर देखते हैं कि आप फिट हो रहे हो कि नहीं, या प्रोड्यूसर्स देखते हैं, तो आज भी ये होता है कि हालांकि नाउ पीपल नो दैट बिकॉज ऑफ अनदेखी एंड बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ बधाई दो, नाउ पीपल casting directors will know me, but they'll still call me and they'll ask me to audition. So I take it as a learning, क्योंकि वो एक audition space है कि ठीक है, अगर आपको स्क्रीन पे एक्ट करने का चांस अभी तक नहीं मिला है, वो ऑडिशन में तो आप एक्ट कर सकते हो ना, वो तो आपका एक स्पेस है जहां आप, भले ही आपकी ऑडियंस उस पॉइंट पे सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, वो भी तो एक ऑडियंस है, तो उन्हें दिखा दो कि आप यू नो क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते. So I always took that as a space to learn and a space to grow, and yeah, I think that's how I'll always continue to look at it. And it's not just auditions, right? Tomorrow I could have a project which does not work, so am I going to get dejected and fall down? No, I'll take it as a learning, and it's much easier said than done, but that's the only way to look at it. वाकई। सो ऑफ कोर्स मुझे लगता है ये एक ज्यादा इट्स अ इंस्पायरिंग पार्ट कि लोगों को रिजेक्शन से जो डर लगता है कहीं ना कहीं उससे हटने की जरूरत है, और रियलिटी है जिसे बिलीव करके आगे आने की जरूरत है। सो आपने बधाई दो में यू वर्क विद भूमि पेडनेकर, एंड सबसे बड़ी बात है कि दोस पीपल आर लाइक, आई मीन ऑफ कोर्स एज अ वुमन कहीं ना कहीं रियलिटी स्टोरीज पर वर्क करती भूमि पेडनेकर, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? Oh, amazing. And honestly, I have so much respect for Bhumi's body of work. So I was very excited, and on बधाई का you know मैंने इसलिए वो टेक अप किया क्योंकि उसमें पार्ट मेरा है एक 1.5 मिनट का मैक्सिमम, बट
मुझे उस कहानी का हिस्सा बनना था, मुझे उस स्टोरी का हिस्सा बनना है, मुझे इस कास्ट एंड क्रू के साथ काम करना है, मुझे हर्षवर्धन सर के साथ, डायरेक्टर जो है उनके साथ काम करना था, एंड टू गेट टू प्ले अ होमोसेक्सुअल कैरेक्टर with Bhumi is it's a no-brainer. And you know, the thing about my part is it's a very short span, but उस short span में आप कोमल जो कैरेक्टर है उसको आप देखते हैं वो कि वो कॉलेज टाइम में जब they fall in love, and then a span of like a break of a few years, and now Komal is married in a traditional family, she's got a kid, but in her heart she still misses her, you know, क्योंकि Yes. वो कोमल एटलीस्ट वो नहीं स्टैंड अप कर पाई सोसाइटी को, उससे लगा था कि ये नहीं होगा आगे, ये नहीं जाने वाला, मैं शादी कर लेती हूँ और जो मुझसे एक्सपेक्टेड है वो कर लेती हूँ, बट टू बी एबल टू प्ले दैट two different times in the given short span I had on screen, to me, like I love that. I mean, I think it's about what you do in the time you've been given, and Bhumi is such an incredible person to work with, because of course she's done so much work. She's one of the most talented actors out there, but when you're working with her, she's so down to earth, she's fun, she's so easy to work with. So I think she immediately puts you at ease, and even for her there's nothing above work. So work and what and Right. as with the character. Yeah. So अपेक्षा, अनदेखी 2022 की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, वी आर इन द थर्ड मंथ ऑफ द 2022. सो किन नए प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखने वाले हैं, किन फिल्मों या वेब सीरीज में नजर आएंगी आप? वो मैं बतौर लीड, हम्म बतौर लीड, सॉरी बतौर लीड एक्टर, बतौर लीड एक्ट्रेस. बोलो आप, हो जाएगा बट हम तो चाहेंगे, ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि वो मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, बट आई एम श्योर कि आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे देयर जिसे आर आप थिंग्स इन द पाइपलाइन, बट Yes. जब तक वो एकदम सॉलिड वो नहीं हो सकता कि मैं उसे अनाउंस कर पाऊं, तब तक मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि you know, like there's a right time and place for everything, but there are exciting things and I'm really looking forward to them. अभी तो बस अनदेखी अनदेखी अनदेखी. सर होपिंग कि इस साल हम अच्छे से, मतलब बतौर लीड जैसा कि मैंने कहा, हम देखेंगे आपको. आई एम एक्सपेक्टिंग. अपेक्षा, आपकी नजरिए में महिलाओं के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे नजर में सबके लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड अगर हमारे देश में देखें तो महिला की संख्या काफी कम है एजुकेशन में. अगर परिवार में 4 बच्चे हो तो जो परिवार अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसमें यूजुअली ऐसा होता है कि महिला को बोल देते कि चलो तुम घर में काम कर लो या whatever. So I think it's very very important for everybody to be educated, at least a certain degree till you can take off by yourself. So yeah, I really hope that we cover that gap that is in the education in our system. किन चुनौतियों का सामना मतलब आजकल की महिलाओं को करना पड़ता है? जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन की कमी तो है, साथ ही किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए? I think at every which is happening now, like women are really talking about it and really coming forth in every field. I think वो समय थोड़ा गया है कि जब हम सिर्फ हाँ ना करते हैं, मतलब सिर्फ बैठ के सुनना है कि दूसरे हमें क्या कह रहे हैं करने के लिए. I think it all boils down, all the discussion about feminism and women empowerment and everything boils down to having the right, the freedom to make your own choice. It's just that. And if tomorrow a woman chooses to be a homemaker and it's her choice, then that's the most respectful decision. You know, it deserves respect, that decision, because it's her decision. And if tomorrow a woman chooses to run 2 businesses, then that is her decision and that must be respected. I think it just all boils down to having the freedom to make your choice, and I think that change is actually happening. Obviously it's happening much more in metropolitan cities. I think we still have a lot of progress to make in tier 2 and smaller spaces, but I think that change is happening and I hope it continues to happen, because अभी भी वो households तो होते ही हैं जहाँ
भले ही औरतों को प्यार मिलता हो पर उस लेवल का शायद इज्जत नहीं मिलती हो, एंड आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। कहाँ से आती है इंस्पिरेशन फॉर द एनर्जी, एज यू टोल्ड कि हम कई बार बैरियर्स आए बट स्टिल यू हैव जस्ट गिवन योर बेस्ट, जिसका नतीजा है कि आज हम आपके यहाँ देख रहे हैं। तो कौन है आपके इंस्पिरेशन? Everyone around me. There's not one person that I think, मुझे अगर मैं ना सच बताऊं, मैं कोई सेट पे हूँ और मैं किसी सपोज लाइट दादा को देखती हूँ जो बहुत मेहनत से दिन भर खड़े रह के और बड़े मेहनत से और डेडिकेशन से अपना काम करते हैं, मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है। आप आसपास ही देख लो, अगर कोई भी इंसान अगर बहुत ऑनेस्टी, अर्नेस्टी और डेडिकेशन से अपना काम करे तो आई थिंक दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। एंड आई थिंक मोर देन दैट इट्स ऑल्सो कि एक विजन है, अब उस विजन को अचीव करने के लिए जो करना पड़े वो करेंगे। सो अपेक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे नवभारत परिवार की ओर से आपकी आने वाली हर फिल्म और वेब सीरीज को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुपर वुमेन कैंपेन से जुड़ने के लिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी कि इस सुपर वुमेन कैंपेन के माध्यम से नवभारत के जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहूंगी कि अपने इट्स लाइक टेक अप स्पेस। जो आपको करना है, जो आपको चाहिए, जो आपको बोलना है, जो भी आप चाहते हैं, just stand up for that. I think that is the main thing. And I think women empowerment has to be just as much supported by men as well. And I would say to every man who understands that and respects that and supports a woman, thank you. And I hope that there are more men who join that and support that. And as for women, I would just say, sorry, can I take that again? There's something specific I want to say in the beginning. Can you just ask me that again? आप इस सुपर वुमेन कैंपेन के जरिए नवभारत के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? I think I would just say कि take up space, take a stand for what you believe in, for what you want your life to look like, whether you want to get married at 20 or 40, or you want to have a child, don't want to have a child, you want to have a career, you want to be a homemaker, do whatever you want to do, but stand for that. And I hope and I wish that they find sort of the society or the cushioning around them to be able to do that. And I think my biggest wish for women empowerment, for Women's Day and all of that is that I hope we reach a day where we don't need these terms anymore, because the society has reached a point where these terms are null and void, because we already have a society which is like that. So, but up until then, I wish a lot of love, strength, courage, and freedom to all the women. Thank you so much, अपेक्षा, इस मुहिम से जुड़ने के लिए. Thank you so much for having me. Thank you.